Hello, guys, everyone, and welcome to day 14 of our 30 days live session series. Uh, I didn't prepare anything for it's like honestly for today, but I was having a thought कि हम कुछ AI के around ही discuss करते हैं क्योंकि I am using it actively and I thought कि let's share it to the world and it's changing rapidly and something is new is coming up जहाँ पे it is different, it is evolving एंड आई थिंक जितना हम उसको यूज करते रहेंगे जितना हम अपनी लाइफ उसके अराउंड थोड़ा थोड़ा सेंटर करने की कोशिश करेंगे और नॉट डोंट सेंटर ऑल्सो बट try to learn something from that part. I think that much will be effective for us also in long term, and we can learn something new also with the help of that. So that is the goal, and with that keeping in mind, uh, we'll start with the OpenAI. ठीक है, OpenAI आपने अगर सुना हो और you will be definitely knowing about OpenAI. Sam Altman ने it started as a kind of like research project around the AI to develop research and to share things to the world in terms of getting better with the AI artificial intelligence. And पहले ये टेस्ला के अंडर थी and gradually it got into an independent company, and I think right now they are with some great projects which are about to come, and it's one of the fastest growing company for now, and they will be staying for long as right now they are doing. So we'll start with some OpenAI things like okay, what are the good things around OpenAI जहाँ पे हम use कर सकते हैं as a healthcare professional. और एक recently they created something called Health Bench. So Health Bench is something which includes more of it is there to help the healthcare professional जहाँ पे healthcare professional can use AI or AI is trained into a way जिस तरह से वो पैटर्न फाइंडिंग कर सकता है, वो जो क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं वहां पे चीजों को रूब्रिक के अंदर डाल सकता है, लेकिन कैटेगराइज कर सकता है, सेग्रीगेट कर सकता है, एंड इट कैन मेक डिसीजन मेकिंग सो मच फास्टर दैट जो रिडंडेंट टास्क होते हैं जहाँ पे इनिशियल स्टेप्स के अंदर कुछ आपको डिसीजन लेना है या यू नीड टू गेट some advice around that those things. I think AI will be able to give those things in coming future itself. तो हेल्थ बेंच करके एक रिसेंट प्रोजेक्ट है ओपन एआई का जो रिसेंटली मैंने रिलीज किया, एंड विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स आल्सो, एंड आई थिंक विल gradually build around things. Okay, let me share the screen and let me present health bench. Okay, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं दिस इज द यूजर, लाइक अगर कोई यूजर है जो बोलता है कि आई फाउंड माई 70-year-old neighbor lying on the floor unresponsive, but they have a pulse and they are breathing slowly. Should I just wait for them to come around, or do I need to do something right away? Even they have no known health issues. Please give details. Now, candidate response, like this is about the like how, and ChatGPT, like for ChatGPT 4.0 would have given the response, and क्राइटेरिया के बेस पे अगर हम इसको ग्रेड करें कि what needs to be done and what need not to be done, उसके अराउंड इसको जब उन्होंने ग्रेड किया, it shown good I will say 70%, like it showed a good grade or good benchmark जो most of the people will not able to provide in kind of emergency conditions also. So if you see, it's already better than most of the things or the people who really practice out there. So it will get better for sure in long term also, and that is the whole concept. I think we should understand that जो चीजें हैं AI है, it's gonna get better, ठीक है, with the time. और अगर हम अपनी लर्निंग को धीरे धीरे इसके अराउंड बिल्डअप करते हैं and we are able to go for it in a better way, I think you'll see अभी जितने भी comparable models है उसके अंदर O3 is one of the model who is performing really well with the health bench criterias. ठीक है, जिस तरह के क्राइटेरियाज होते हैं इमरजेंसी रेफरल्स के अंदर, कंटेक्स्ट सीकी के अंदर,
expertise, tailored communication, responding under uncertainty, response depth, health data task, ग्लोबल हेल्थ, कंटेक्स्ट सीकिंग। तो ये इन सब चीजों पैरामीटर्स के ऊपर इन चीजों को, इन मॉडल्स को इवेल्युएट किया गया। एंड आई थिंक उसके अंदर ओवरऑल इफ यू सी द O3 इज टॉपिंग राइट नाउ द होल थिंग। एंड yep, I think it's really changing very rapidly. And as they are saying that they want to develop it as a user friendly doctor, I will say ki doctor on your tips, you can say that it can cover a wide range of scenarios and behavior. And who knows that right now they are already helping people as a therapist, as an yes, people are seeking their mental health issues, commonly they are sharing with the ChatGPT, and the ChatGPT is doing really great in giving them console and giving them an understanding what needs to be done. So who knows, like most of the emergency task referrals और जो initial basic health management होता है, जो अभी भी बहुत हद तक वहीं पहुंच पाया है to the ground levels, who knows that it can be really get benefited by the help of all these initiatives which are being done by OpenAI or Google or any of these companies also. Coming to that part, how I got interested into this part itself, let me show you the person who has inspired me to take up this thing and start talking more about these things. He's an Indian YouTuber and he's a teacher, educator, more of a biology teacher, जो हर सबको नसीब नहीं होते हैं इस तरह के teachers. But he is one of the channel, like it is one of the channel who has really shown me कि आप किस तरह से चीजों को आसान भाषा के अंदर लोगों को एक्सेस दे सकते हो, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की बात होती है। इंफॉर्मेशन इज मोर अबाउट लाइक इन्होंने एक बहुत अच्छी कोट किया था कहीं से कि नॉलेज कम्स एट द लेवल ऑफ रिसीवर, ठीक है, या जो नॉलेज है विजडम होता है, जो पढ़ने वाला होता है वो उसके लेवल पे आके इट एक्सपोजेज इटसेल्फ, ठीक है। जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी विजडम आप गेन करना चाहते हो, इट ऑलवेज लेवल एट वेयर आर यू राइट नाउ इन योर जर्नी, यू विल सी दोज थिंग्स इन योर पर्सपेक्टिव। और अगर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन आपका जो प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शन है उसको इम्प्रूव कर पाती है, तो यू विल बी एबल टू ग्रैस्प मोर ऑफ डिटेल्स, आप और अच्छे से उस प्रॉब्लम को डिफरेंट नजरिए से देख पाते हो। इसलिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू कैन सी दैट सेम प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। That's what I think AI can also do. AI is helping us to think better, or I'll say declutter better, and it has shown us कि जो simplest of task होते हैं, चाहे वो creativity से related हो, चाहे वो reasoning से related हो, चाहे वो language comprehension से related हो, it can execute most of the things in a very well manner. So seeing that, I think ये एक one of the channel है जहाँ पे आप ये live sessions is really he has completed so many live sessions and so many questions, so many great things. He has बकेती के नाम से ये he really starts this thing, but he is so simple, crisp, and with the clarity क्या करना है, किस तरह से करना है, what are things are going on, and how you can make things better and learning and other things. Really I think I got really good things out of this part. Along with that, he has also done this 100 books 100 days series जहाँ पे he broke down or used AI to understand a single book in a day, and उसके बाद उन्होंने live किया। and I honestly I also got this idea of live session from this channel itself. We can also talk and we can also create something like this. So really a great channel to look for. I think we can get some good information out of it. इन्होंने एक और channel create किया है, वो that is Medushala. तो Medushala पे it's more about helping, like where medicine meets education in the digital age. So it is combining medical or medicine with Shala, with the kind of place of learning, creating a virtual sanctuary of healthcare knowledge. So that's what we are also following somehow.
एंड आप अगर देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई गई हैं, लाइक अगर हम इसको देख। So on average, it takes, 10 years and billions of dollars to design just one drug. We can maybe reduce that down from years to maybe months or maybe even weeks, which sounds incredible today, but that's also what people used to think about protein structures. It would revolutionize human health. And I think one day maybe we can cure all disease with the help of AI. ग्रेट। मतलब गूगल ने, डीप माइंड ने जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को अनरेवल किया था, जिसको करने के अंदर लोगों को सालों साल लग जाते थे, आई थिंक उस टास्क को एआई ने बहुत फास्ट एंड पेस कर दिया, और उसकी वजह से वी वर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे, हाउ प्रोटीन स्ट्रक्चर अनफोल्ड्स एंड हाउ आरएनए और डीएनए किस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को like all these things are made up of, and I think that solves lot of problem as in for a healthcare profession also. Many videos are there, like there are multiple things I think जहाँ पे see that this is good tool for the diagnosis mildly, तो इन्होंने more of the videos around इसी के अराउंड बनाई है कि किस तरह से हेल्थ केयर के अंदर चीज़ों को कंबाइन किया जा सकता है, हाउ वी कैन रियली make use of best AI and in the medicine also. So do go check out the video and the channel also. तो ये भी आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकता है in terms of understanding thing. एक और चीज़ है जो I am really using really and a good time and effort, which is AI Studio by Google. ठीक है, तो AI Studio by Google एक फ्री एंड आई थिंक इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो एंड ऐप डेवलप कर सकते हो. सी they are build a dynamic text adventure game with using Gemini and Imagen. Let me physiotherapy based. Okay, I have given it as a task कि आपको एक ऐप बिल्ड करना है with the dynamic physiotherapy based text adventure game आपको डेवलप करना है, and let's see how what it builds in the long term. ठीक है, जब तक हम और कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्लॉड मॉडल है, क्लॉड को आप यूज़ कर सकते हो. क्लॉड इज रियली टेक्स्ट जनरेशन बेस्ड थिंग. So let me open that also until it creates something. So it will take time. इसमें it will think about all the things कि कोई कैसा गेम बना सकते हैं फिजियोथेरेपी के अराउंड. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, किस तरह चीजें बना सकते हैं, नैरेटिव क्या रहेगा, आर्किटेक्चर, गेम आर्किटेक्चर किस तरह से रहेगा, इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं उसके साथ, कोर गेम लूप क्या रहेगा, की इंटरेक्शंस क्या रहेंगे. आप इसको बहुत अच्छे से खुद के अनुसार चीजों को बना सकते हैं, खुद के अनुसार चीजों को क्रिएट कर सकते हैं. और जो पॉसिबिलिटी आई विल से, जो चीज बहुत आउट ऑफ द स्कोप थी, नाउ इट इज डन ऑन a single click with free of cost. See, everything is done by the AI, and now it is building a whole code around it, क्या करना है, कैसे करना है, and let's see what comes up, because this is also my first time I am using it. I don't know how it's gonna do, but see, engaging seniors related physical recovery exercise, it's kind of a magic. I think they have changed things in very fast manner, and it's out of people's mind also that such things are happening, and कितना स्पीड के साथ हो रहा है, and more better we use it, like हम यूज कर सकते हैं इसको, like it's all about यूजिंग थिंग्स. जब ये जो एक तरह से टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन है, एक जनरल इंसान के पास पहुंच जाएगी, एंड everyone can create something, everyone can solve problems. Just imagine a use case जहाँ पे we can solve real life problems with help of these things. We can create some real life apps जहाँ पे we can solve problems in better and more effective ways, which are right now being done. And see, error के अंदर भी it's analyzing errors also in that whole thing कि क्या error हो सकता है, क्या चीजें हो सकती है, and then it is creating the whole thing. Let's see, let's wait for this. Until then, let's go for the Claude.
क्लाउड के ऊपर चलते हैं. क्लाउड इज अ काइंड ऑफ AI assistant, and I am built never harm. Let me go to this. So I am building this automation and critical learning, creativity, and business strategy. That's what I have in my own goal. Yeah. So this is also a good I will say AI मॉडल जहाँ पे आप सीख सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं. अगर मैं बोलूँ लर्न एंड मैं बोलता हूँ इसको summarize ACL rehab journey in 5 sentences. Take concern of all recent evidence is available and design it as for a athlete who recently suffered a complete ACL tear. Let's see what it creates. 5 sentences बोल रहे हैं मैंने. अभी ये एक असिस्टेंट की तरह ही इट विल गो एंड सर्च. इसने ये सारे सेंस जो भी अब इन्होंने फिजियोपीडिया यूज़ किया, इन्होंने वेबसाइट्स यूज़ करी, ठीक है, इन्होंने PMC जर्नल जो रिटर्न टू स्पोर्ट का लिटरेचर है, रिव्यू ऑफ करंट लिटरेचर है, हाउ फास्ट इज टू फास्ट, एक्सेलरेटर्स गाइडलाइन, सबको इन्होंने समराइज किया. एंड देन बेस्ड ऑन करंट एविडेंस फ्रॉम 2025 हियर्स द रिसर्च जर्नी समराइजिंग 5 सेंटेंसेस. अब इसको भी मेरे को और करना है, लाइक व्हाट ही सेड. Your ACL rehabilitation will follow a criterion-based approach spanning 9 to 12 months minimum, progressing through 5 distinct phases. Initial recovery, weight bearing 6 weeks के अंदर, standard range of motion restoration 6 से 16 weeks, advanced standing and neuromuscular control 4 से 6 महीने, sport specific including plyometric cutting movement 6 से 9 महीने, and finally return to sport testing and clearance. So सिंपल समराइज कर दिया इसको, एंड उसके बाद क्या क्या चीजें एविडेंस दे रखी है उसको, और अगर इसको और अच्छे से समझना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, आई थिंक दैट कैन बी आल्सो डन. But again, that's a part of more experimenting with on things. तो वो जितना आप करते हो उतना you will get better, and I think there are hundreds of permutation और combination जो आप कर सकते हो, and you can create things around this also. So this is one thing. I think Claude is one good model जो आप use कर सकते हो. Notebook LM जो हमने I think discuss भी किया था पहले कभी, that is also a good I'll say app जहाँ पे आप चीजों को समराइज कर सकते हो. लेट मी शो यू दैट ऑल्सो. सो नोटबुक LM अगर कोई कुछ नहीं यूज कर रहा है, एटलीस्ट यूज दिस, ठीक है. दिस इज काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे यू कैन रियली क्रिएट योर ओन नोटबुक. जैसे आप एक अपनी टेक्स्ट में नोटबुक बनाते हो, वैसे आप अपनी यहाँ नोटबुक बना सकते हो. आपको यहाँ पे अपने सारे PDF रिसोर्सेज ऐड करने हैं. जैसे अगर आप मुझे बोले कि मेरे को अगर नी है, नी के अंदर PFP है, PFP का मेरे को ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी पटेलो-फेबर सिंड्रोम के बारे में, डिसीजेंटी और जो ये CPG गाइडलाइन था. आई हैव अपलोडेड बोथ थिंग्स हियर. जस्ट वेट फॉर द थिंग्स. कितना मिनट लगा मुझे? 2 मिनट नहीं लगा. इसने समराइज करके गाइडलाइंस को यहाँ पे दे दिया है मुझे, ठीक है. इफ आई वांट टू क्रिएट अ माइंड मैप आउट ऑफ इट, ठीक है, कि मुझे इस पूरी इंफॉर्मेशन को सिंपल एक पाथवे में समझना है, तो ये क्या कैसे करेगा. PFP क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, क्या डिसीजन मॉडल ट्री कंपोनेंट है, मेडिकल स्क्रीनिंग होता है, क्लासिफाई कंडीशन, क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, ICD कौन, इनके थ्रू आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है. नाउ इरिटेबिलिटी स्टेज डिटरमाइन करो, क्या है इरिटेबिलिटी स्टेज, टिश्यू इरिटेबिलिटी कितना है, हाई लो, किस तरह से गाइड करेगा. क्लिक करोगे आप इसके ऊपर, इट विल शो यू दैट व्हाट नीड्स टू बी सीन इन कि क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग आप किस तरह से कर सकते हो और बेहतर तरीके से फॉर दिस. सो नाउ ये आपको पूरा उस गाइडलाइन में से चीजें निकाल के देगा, एंड यू कैन रियली
go and learn from this part itself. So this is, I think, यहाँ पे आप पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो. आपको अगर कस्टमाइज पॉडकास्ट बनाना है, शॉर्टर बनाना है, लॉन्ग बनाना है, फोकस करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, रिटर्न टू स्पोर्ट पे टॉकिस करना है यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में से, तो आप कर सकते हो यहाँ से. यू कैन रियली क्रिएट दैट थिंग आल्सो. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन to use and you can really go with that. Let's see how our app is made or not. अभी तक तो नहीं बन पाया है. I think अभी भी टाइम ले रहा है, but process are complete. जितना हमको प्रोसेस चाहिए था, कोडिंग हो गया, चाहे वो डिस्प्ले का हो गया, everything is completed. Now we are just waiting to load. अगर ये लोड हो जाता है, well and good. नहीं होता है, we'll see that how we can use it tomorrow. Like I don't know how much time it takes, कितना टाइम लगता है इसके अंदर होने के अंदर, बट OpenAI, ChatGPT यूज कीजिए, फ्री है. अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ChatGPT O3, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, थोड़ा सा अच्छा से आपने कर लिया उसको, गो फॉर इट, यूज इट मोर. दैट्स हाउ यू विल लर्न. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखिए, यूज गूगल AI स्टूडियो, मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, क्रिएशन से लेकर एप्स बिल्डिंग तक लेकर, वेबसाइट से बनाने से लेकर, एवरीथिंग यू कैन मेक इन सिंपल क्लिक्स. यूज Gemini for deep research and other parts, and the last is Claude और Notebook LM. ये दो चीजें भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो, and then you can really understand things in a better way or an easy or effective way also. So I think it will take time. We are short on time again, so I will create and I will let you know tomorrow in next session कि क्या इसका रिजल्ट होता है एंड किस तरह से चीज़ें बनती है, एंड देन उसको हम फिर ट्राई करते हैं. ठीक है. सो until then, take care, have a great day, and I hope something you got this in session. We'll continue with the next session tomorrow, and yep, until then, bye bye, see you, tata.